Guys, in this video we are going to discuss about the MCQs of hire purchase system, practical as well as theory. So hello दोस्तों, मेरा नाम है जय परमार and you are watching an educator. Let's start the class. Here is the first question. Ahmedabad Manufacture Limited purchased on 1st April 2008 machinery costing rupees 47,500 from ABC Limited on hire purchase system. The terms were as under: rupees 20,000 to be paid on 1st April 2008, rupees 10,000 to be paid on 31st March 2009, rupees 10,000 to be paid on 31st March 2010, and rupees 10,309 to be paid on 31st March 2011. Charge interest at 5% per annum on yearly balance. Find out total interest. Now, this is so basic question, but to solve this question, आपको इसका table पता होना चाहिए कैसे ये solve करना है. So let's have some highlight on the table. So there are 6 columns in a table. First one is for date. Second one is for opening balance of cash price. Now, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करते थोड़ा. देन इंस्टॉलमेंट, राइट. उसके बाद है नंबर 4 पे इंटरेस्ट एंड नंबर 5 पे क्रेडिट टुवर्ड्स कैश प्राइस. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इंस्टॉलमेंट और दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इंटरेस्ट प्लस क्रेडिट प्राइस, इन दोनों का टोटल होके बनता है आपका इंस्टॉलमेंट, राइट. सो and last one is balance of cash price key. After deducting this credit price, I mean number 5 column from the number 2 column, कि आपका टोटल बैलेंस सपोज 10,000 पे करना रहता है, उसमें से आपने पहले इंस्टॉलमेंट में 1,000 कैश प्राइस माइनस पे कर दिया आपने. सो वो माइनस हो गया. बैलेंस कैश प्राइस कितनी, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू मुझे कितनी पे करनी बाकी है वो आएगा यहाँ पे. चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स इसमें रखते हैं एंड विल कम टू नो कि कैसे क्या होता है. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैश प्राइस अवेलेबल है. बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको अपने पैरामीटर्स पे चलना है. पैरामीटर्स कौन से, लेट मी शो यू दैट. कि आपको कुछ चीजें चेक कर लेनी है. क्या? फर्स्ट वन इज कैश प्राइस, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, then installment, and your amount of interest if available. क्या इनमें से कोई भी चीज दी हुई है या नहीं? इफ इट इज गिवन देन नो इश्यूज. इफ नहीं दी है तो हर एक मिसिंग चीज के लिए कुछ अलग अलग मेथड्स है जो हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे. सो इफ यू सी, यहाँ पे मेरे पास कैश प्राइस भी है इस क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, इंस्टॉलमेंट भी है और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में एडेड भी है. सो यहाँ पे कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम चलेगा. चलिए चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पे. दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, दैट इज 47,500. सो 47,500. ना इंस्टॉलमेंट मुझे दिया है पहला इंस्टॉलमेंट. नाउ इफ यू सी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड ऑन 1st April 2008 और हमने ये मशीन भी कब परचेस करी है? 1st April 2008, यानी कि सेम डेट को. सो इट इज एन इंस्टॉलमेंट. इसको हम बोलेंगे इंस्टॉलमेंट, बट इट इज योर डाउन पेमेंट. और जब डाउन पेमेंट की बात आती है तो डाउन पेमेंट में कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सेम डेट पे दिया होता है एट द टाइम ऑफ परचेस. इंटरेस्ट के बाद अगर हम लेट पैसा देते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है. सो देयर इज नो इंटरेस्ट इन डाउन पेमेंट, इट इज अ फुल्ली प्रिंसिपल वैल्यू. सो डाउन पेमेंट अमाउंट इज 20,000. सो उसी तारीख से हम माइनस करेंगे 20,000. नाउ एज आई टोल्ड यू देयर इज नो इंटरेस्ट, सो इट विल बी डैश इन इंटरेस्ट कॉलम. नाउ क्रेडिट टुवर्ड्स कैश प्राइस. अब इंस्टॉलमेंट दो चीजों से बनता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 20,000, सो यहाँ पे कोई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये डाउन पेमेंट है, इसलिए सारी ही जो वैल्यू है वो है प्रिंसिपल वैल्यू. सो 20,000 आपने प्रिंसिपल वैल्यू पे की है 47,500 के सामने. दैट इज योर टोटल
कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी परचेज. सो अब आपका बैलेंस कितना बचा है? यू हैव टू डिडक्ट कॉलम नंबर 5 फ्रॉम कॉलम नंबर 2, यानी कि 47,500 में से आपको माइनस करना है दिस 20,000. सो यू विल गेट 27,500. Now this balance should be carried forward for the next year, that is next installment. So 27,500 will be here as an opening balance of cash price. Now again same procedure, we have to move to the next installment. My next installment is of rupees 10,000 on 31st March 2009. So 10,000. Now this is an installment after 1 year. So इसमें इंटरेस्ट होगा 1 साल का. अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? देखो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, दैट इज 5% पर एनम. सो इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है बैलेंस ऑफ कैश प्राइस पे. रिमेंबर, इंटरेस्ट शुड बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस ऑफ कैश प्राइस. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस ईयर, यहाँ पे मेरे पास बैलेंस ऑफ कैश प्राइस है 27,500. सो मैं इसके ऊपर सीधा 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा. इट शुड बी लाइक दिस, 27,500 into 5%. So it will be 1,375. Now this is my amount of interest. As I told you, installment दो चीजों से बनता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू. सो मेरे पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 10,000, उसमें से मैं अगर इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, so I will get my column number 5 principal value, or you can say credit towards cash price, कि कितना कैश प्राइस है इस इंस्टॉलमेंट में. So it will be 10,000 minus 1,375, 8,625. And now for column number 6, or you can say for finding out the balance of cash price, I have to deduct this 8,625 from my balance of cash price at the beginning, that is 27,500. So I will get 18,875. Now again I will carry forward this balance to the next year, that is 18,875. So and again I will write the next installment, that is of again 10,000 to be paid on 31st March 2010. So again 10,000 rupees of installment. Now in that again same scenario, यहाँ पे भी वही मुझे इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करना होगा. दैट विल बी 18,875 into 5%. So I will get 944. So I will get the principal value after deducting 944 from the amount of installment will be 9,056. And for the balance of cash price, again I have to deduct 9,056 from 18,875, that is an opening balance of cash price. So I will get 9,819. Moving to last installment, that is 9,819. Now for kind information, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हम पे करते हैं और उसमें जब बैलेंस ऑफ कैश प्राइस होता है वहां पे ऑलवेज आएगा डैश, क्योंकि एज वी नो दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट. सो इसके बाद कोई बैलेंस ऑफ कैश प्राइस बचेगी ही नहीं. यहाँ पे हमारा इंस्टॉलमेंट खत्म हो रहा है, हमारा पेमेंट खत्म हो रहा है, राइट. सो ऑलवेज इट विल बी जीरो और यू कैन से डैश. सेम वे एक और कंफर्म थिंग है कि जो आपकी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे 9,819, वो सेम ही होनी चाहिए आपकी कॉलम नंबर 5 में, प्रिंसिपल वैल्यू वाले कॉलम में, यानी कि क्रेडिट्स कैश प्राइस में. दैट विल बी 9,819, राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट योर इंस्टॉलमेंट नाउ, सो दिस इज लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑफ रुपीज 10,309. सब सिंपल है, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा 10,309 में से 9,819 माइनस कर सकते हो, लाइक दिस 10,309 माइनस 9,819. सो यू विल गेट योर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट विल बी 490. Now make a total of your interest column, that will be 2,809.
9. So this is your answer for interest. Option A is the correct one. Moving to next question. A machine was purchased for rupees 6,000 on hire purchase. Rupees 12,000 was paid on signing the agreement, and the balance was paid in 4 equal annual installment of rupees 1,800 each. Find out interest for third year. Now, if you see, again हम parameters की बात करें कुछ. So, पहला था cash price, then installment, then rate of interest. So यहाँ पे मेरे पास कैश प्राइस अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है. सो इन दिस केस आई हैव टू यूज रेशियो मेथड. अब ये रेशियो मेथड क्या है, आई विल टेल यू दैट इन द क्वेश्चन. सो मूव टू आवर मेन स्क्रीन. नाउ जब भी ऐसी चीज हो सो आपको एक रेशियो मेथड यूज करनी होती है, बट बिफोर दैट हम सीधा यहाँ पे इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, आई एम नॉट सेइंग इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट, आई एम सेइंग टोटल इंटरेस्ट कितना पे होगा सारे इंस्टॉलमेंट में, वो हम फाइंड कर सकते हैं. चलिए वो कैसे फाइंड करते हैं. सो फॉर दैट आई एम हैविंग अ कैश प्राइस ऑफ 6,000, राइट. नाउ आई हैव टू पुट वन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. सो माय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बेसिकली क्या होता है, आपका टोटल कैश प्राइस प्लस आपने जो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पे किया है वो. सो इफ यू सी, यहां पे आप डाउन पेमेंट पे कर रहे हो सबसे पहले, प्लस योर टोटल इंस्टॉलमेंट्स, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, राइट. सो योर डाउन पेमेंट इज 1,200 plus your total amount of installment which includes interest. So वैसे आप टोटल 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 1,800 का एक. सो योर टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 8,400. अब जब इसमें से मैं कैश प्राइस माइनस करूंगा, दैट इज 6,000. So I will get the amount of interest. That will be 2,400. So ये मेरा इंटरेस्ट है टोटल सारे इंस्टॉलमेंट का मिला के, राइट. बस इसमें से कौन सा इंस्टॉलमेंट का कितना इंटरेस्ट है दैट आई डोंट नो. सो फॉर दैट आई हैव टू मेक अ कैलकुलेशन, और यू कैन से आई हैव टू फाइंड इट विद द रेशियो मेथड. चलिए लेट्स स्टार्ट द रेशियो मेथड. दैट मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम the contract price only, right. चलिए, so my contract price is 8,400, then less my value of down payment. You can say my value of first installment, that is my down payment. So down payment, that is 1,200 rupees. So the balancing amount will be 7,200. Now this 7,200 is outstanding balance which includes interest of installments, right. So moving to next, less first installment, that is of 1,800, माइनस करेंगे इसको, then it will be 5,400. Again this is your outstanding balance, again less your second installment, again 1,800, so it will be 3,600. This is again your outstanding balance, then again third installment, that is again of 1,800.
So your balance will be 1800, and last your fourth installment. So your fourth installment is your final installment, that is again of 1800. So you will get dash. Now what all you need to do, you have to make a ratio of this outstanding balance. So this is your first year's outstanding, this is second, this is third one, and this is fourth one. So if you see all the balances, you can divide it with 1800, not 18,000. You can divide this all with 1800. So your ratio will be, for first year it will be 4, for second year it will be 3, for third year it will be 2, and for fourth year it will be 1. So you can distribute this installment in the ratio of 4:3:2:1. So your amount of installment after distributing this 2400 into 4:3:2:1 ratio, it will be like this, that for first year, or you can say first installment, for sec it will be 2400, and your part of first installment is, or you can say ratio of first installment is 4/10. So it will be 960. Now for second installment, again same calculation, 2400 multiplied by this time 3/10. So it will be 720. Same way for third year. Again same calculation, 2400 into 2/10 this time, that is 480. And for fourth year, or you can say fourth installment, that is 2400 into 1/10. So it will be 240. So as per your requirement of question, your third year's installment interest is 480. So moving to the main screen, your correct answer is option C, 480. Moving to next question. Paid 2,800 at the time of contract. 4 annual installments were paid, rupees 3120, rupees 2480, rupees 18,880, and rupees 1,320. Rate of interest 10% per annum. Nothing is given, so that's why by default it is per annum. Find out cash price. चलिए, let's see again क्या क्या चीजें दी है आपको. So if we talk about cash price, installment, and rate of interest. So cash price नहीं दी हुई है, installment is given, rate of interest is given. So in this scenario we have to use reverse method. Right. चलिए, moving to our main screen. So यहाँ पे आपको कुछ इंस्टॉलमेंट दिए, यानी कि सारे इंस्टॉलमेंट दिए, कुछ नहीं, सारे ही इंस्टॉलमेंट दिए हुए आपको. Now this is called reverse method. Why it is reverse method? Because we have to start the calculation from the last installment. And why we have to start the calculation from the last installment? क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट ही ऐसा इंस्टॉलमेंट होता है जहां पे आप इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट में से अलग कर सकते हो आसानी से. कैसे? चलिए, इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट इंस्टॉलमेंट, सो सपोज लास्ट इंस्टॉलमेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है 100. ओपनिंग बैलेंस, यू कैन से ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, दैट इज 100, प्लस उसमें ऐड होता है इंटरेस्ट, दैट इज अगेन ऑन प्रिंसिपल वैल्यू, राइट. सो इन दिस क्वेश्चन our rate of interest is 10, and then it becomes installment for last installment, that is 110. So if we talk about the last installment, यहीं से हम इसमें से इंटरेस्ट अलग कर सकते हैं, और जैसे ही हर इंस्टॉलमेंट की हमें बैलेंस मिलेगी, हर इंस्टॉलमेंट के बाद उसमें से हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को ऐड करना है उसमें, एंड देन वी हैव टू डिडक्ट द इंटरेस्ट फ्रॉम इट. कैसे करना है चलिए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट इंस्टॉलमेंट. हम यहाँ पे हर बार एक कैलकुलेशन करेंगे. जैसे ही
हम एक इंस्टॉलमेंट को ऐड करेंगे, वो मैं दिखाता हूँ कौन सी। चलिए, सो स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ इंस्टॉलमेंट। So the fourth installment is of 1320 rupees. उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। नाउ एज आई डिस्कस हियर, हमारा जो इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू है 110 और उसमें जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू है 10। सो इंस्टॉलमेंट से अगर मुझे इंटरेस्ट अलग करना है, सो मुझे यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दैट विल बी 1320 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। क्यों 110? क्योंकि 110 इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जिसमें से 10% मुझे अलग चाहिए। सो आई विल गेट ₹120 जो मुझे माइनस करना है, एंड आई विल गेट माई बैलेंस 1200। सो दिस इज माई बैलेंस। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ऐड करूंगा थर्ड इंस्टॉलमेंट। इसमें मैं ऐड करूंगा थर्ड इंस्टॉलमेंट, दैट इज ऑफ ₹1880, this one. Now again I will make a total, so it will be 3080. Again this balance consists principal value as well as interest of third year, right? Opening balance of principal value, or you can say opening balance of cash price plus interest of third year. So again this is again the formula of 10 by 110. So again मैं लेस करूंगा इसमें से इंटरेस्ट, I will deduct interest. It will be just like the previous one, 3080 into 10 by 110. So you will get 280 and your balance will be 2800. Now moving to next, again this can be known as balance, right? Balance. Then again इसमें मैं ऐड करूंगा second installment. So my second installment is of ₹2480. Now I'll again make a total of it. It will be 5280. So again this is a combination of principal value plus interest. So इसमें से again same way मुझे interest करना होगा minus. So it will be 5280 into 10 by 110. So it will be 480. So my balance will be 4800. So I will carry forward this here to my side में. चलिए, so this is again balance. I am writing the same one, no need to write twice, but because मैं यहाँ ले रहा हूँ इसलिए वापस लिख रहा हूँ. So 4800 is the balance. Now again इसमें मैं ऐड करूंगा first installment, that is of 3120. So I will get total 7920. Now again this is the combination of principal value plus interest. So इसमें से मैं माइनस करूंगा interest, that will be same calculation 7920 into 10 by 110. So you will get 720 and your balance will be 7200. Now that's it. यहाँ पे आपने सारे इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस कर दिया एंड आप पहुंच गए हो, बट अभी भी मुझे यहाँ पे एक बैलेंस और यू कैन से एक इंस्टॉलमेंट ऐड करना है, दैट इज योर डाउन पेमेंट. देखो यहाँ लिखा है 2800 is paid at the time of contract. So this is your down payment जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. So जैसे ही आप ये वैल्यू ऐड करते हो इसमें, you will get your cash price. Your cash price will be 10,000. So hope you get this. Moving to next question. According to hire purchase agreement, 25,000 is the down payment and 90,000 is the total amount of 3 equal annual installment inclusive interest of 15,000. How much would be the cash price of asset? Now यहाँ पे आपको दिया है total down payment plus total of your all installments
एंड उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है वो. सो सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है फाइंड करना. आपको क्या करना है, जस्ट मेक अ फॉर्मूला दैट कैश प्राइस इज इक्वल टू योर डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स, और उसमें से जैसे ही आप माइनस कर दोगे इंटरेस्ट, you will get your cash price. Your down payment is 25,000 plus total of all installment is 90,000 and minus your amount of interest in all installment is 15,000 which was inclusive in installment, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं, राइट. अगर इंक्लूसिव नहीं होता, एक्सक्लूसिव होता तो हम माइनस नहीं कर, सिर्फ डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू का टोटल करें. सो माई आंसर विल बी 1 lakh as a cash price. So here is the correct answer, option B. Moving to next one. Motor car is purchased on hire purchase on 1/1/2014 and depreciated at 10% as per diminishing balance method. Following journal entry was found from his book of account at the end of 3rd year. Calculate cash price of motor car. यहाँ पे आपको कैश प्राइस फाइंड करने को बोला. आपको कुछ हुक्स दिए कि डेप्रिसिएशन की एक एंट्री दी है 3rd ईयर के एंड पे, और डेप्रिसिएशन की मेथड दी है और रेट दिया है. सो डेप्रिसिएशन की मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम WDV या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं. सो यहाँ पे हमें सिर्फ एक एजम्पशन से क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा. एजम्पशन क्या होगी, सपोज ऑन 1st ईयर, यानी कि जब भी ये मशीन खरीदा है, the value of your, you can say the cash price of machinery is 100. Sorry, machinery नहीं, motor car है यहाँ पे. Cash price of motor car is 100. So let's start with it. Suppose on 1/1/14 cash price is 100. Now after 1 year हमने इसमें से depreciation माइनस किया होगा. So less your depreciation, that is 10% of 100. So 100 into 10%. So it will be 10 जो हमें माइनस करना है. सो नेक्स्ट ईयर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस होगा ऑन 1/1/15 को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस होगा 90. नाउ अगेन एट द एंड ऑफ द ईयर मैं इसमें से डेप्री माइनस करूंगा अगेन 10%. अब यहाँ पे रिड्यूसिंग यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दी हुई है. सो मुझे इस 90 पे ही अगेन डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा. अगर स्ट्रीट लाइन होती तो मैं हर साल 10 10 10 ही माइनस करता, फिक्स अमाउंट, बट यहाँ पे हर बार अमाउंट चेंज होगी. सो अगेन 90 into 10%. सो फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी 9. सो अगेन इसको माइनस करते आई विल गेट 81. सो दिस इज माई ओपनिंग बैलेंस फॉर 3rd ईयर 1/1/16 I can say. Then again less depreciation for 3rd year, it will be 81 into 10%. So it will be 8.1. बस अब यहाँ पे मुझे रुक जाना है. क्यों? क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे 3rd ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री दी है और उसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी है. दैट कि 3rd ईयर को डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी 65,610. So on 3rd year, value of depreciation on 8.1 is 65,610. How much for 100? Right. So simply हम जो फॉर्मूला लगाते थे अब तक यूज करते हैं कई बार, वही सेम मुझे लगाना है. दैट on 8.1 it is 65,610. How much for 100? So I will get 65,610 into 100 divided by 8.1 and I will get the amount 8,10,000. So correct answer is option B, 8,10,000. Moving to next one. Rahul purchased a machine. He paid 25,000 at the time of agreement and 3 installment of rupees 40,000 each at the end of each year. Seller recovered 5% interest per annum to annuity table cash price at 5% per annum. For 3 year, rupees 1 is 2.72325. Find out the cash price of machine. Now this is so simple to calculate this.
ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. दैट यहाँ पे आपको बोला है एन्युइटी. दिस इज द एन्युइटी मेथड बाय द वे. नाउ एन्युइटी यहाँ पे आपको 3 साल के बाद उस पर्टिकुलर एक असेट की वैल्यू क्या है विदाउट इंटरेस्ट वो आपको दिए, दैट इज 2.72325. राइट, 3 साल की यहाँ पे उसको वैल्यू दी है. नाउ यहाँ पे एक ईयर लिखा है, सो हमारे पास इंस्टॉलमेंट है 3 ईयर का, हमें वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर 3 years as per the annuity table method, right? So for 1 year it is 1, so how much for 3 year? It will be 3. So on 3, when your installment is 3, that time your annuity cash price is 2.72325. Right, this should be your formula. Now we have to find the amount of total installment. Total installments, that will be 40,000 of one installment. वैसे आपके पास 3 installment है, that is 1,20,000. Right, so 120 on 3 it is 2.72325. How much for 1,20,000? This annuity table is before or you can say without the amount of interest. So यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपके इंस्टॉलमेंट में कितनी प्रिंसिपल वैल्यू है वो. सो इट विल बी 1,20,000 into 2.72325 divide by 3. So you will get 1,08,930. Right, but this is the only value of principal value of your installment. इसमें आपको ऐड करना होगा आपका डाउन पेमेंट. सो प्लस ऐड योर डाउन पेमेंट, that is of rupees 25,000. So you will get your cash price of rupees 1,33,930. So this is your cash price. The correct answer is option B. Moving to next one. Now, Rashmi Limited purchased one machine from Ashma Limited on 1/4/2008 on hire purchase agreement, paying cash of rupees 20,000 and agreed to pay 3 installment of rupees 23,400, 21,600 and 19,800 respectively on 31st March of every year. Compute the cash price. Now again, if you see in this question, हम बात करते हैं क्या कैश प्राइस दी है? नहीं, यहाँ पे कैश प्राइस नहीं दी है. क्या इंस्टॉलमेंट दिया है? जी हाँ, आपको इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए. क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? जी नहीं, यहाँ पे 2 चीजें मिसिंग है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट दिया. सो यहाँ पे हम मेथड यूज करेंगे x प्लस y मेथड. x स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल वैल्यू और यू कैन से कैश प्राइस, और y स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. चलिए मेन स्क्रीन पे चलते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास जितने इंस्टॉलमेंट है उतने हमें फॉर्मूलाज बनाने होंगे. राइट, यहाँ पे मेरे पास 3 इंस्टॉलमेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला. हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए x प्लस y. दिस इज फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. That year first installment is of rupees 23,400. Now say for second installment again x plus y. So the second installment is of rupees 21,600. Your third installment, that is again x plus y, that is 19,800. डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. राइट, सो उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा. नाउ यहाँ पे मेरा 3 इंस्टॉलमेंट थे, इसलिए मैंने 3 फॉर्मूला बनाए. अब जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा उसमें 3 ईयर का इंटरेस्ट होगा. सो इट विल बी 3y. जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है उसमें 2, और जो पहला आखिरी इंस्टॉलमेंट है उसमें 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा. राइट, सो दिस आर द फॉर्मूला दैट वी नीड टू मेक इट. नाउ आउट ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट एनी 2 फॉर्मूला. यू कैन सिलेक्ट एनी 2 फॉर्मूला और उसको एक को दूसरे में से माइनस करना है.
सो यहाँ पे हम पहले दो फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं, दिस एंड दिस. चलिए, नाउ डिडक्ट, दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 1, this is your formula number 2, this is your formula number 3. So मैं second formula को deduct formula number 2 from number 3. So x plus 3y is equal to 23,400 less x plus 2y is equal to 21,600. So x सीधा गया, 3y minus 2y is equal to 1 और 23,400 minus 21,600, so it will be 1,800. So now I got my value of y. Now इस value of y को मैं any of the formula, कोई भी formula में रखूंगा, so I will get my value of x. So let's find out the value of x. Value of x by putting y equal to 1800 in formula any of, कोई भी formula आप ले सकते हो. मैं यहाँ पे formula नंबर 3 लेता हूँ. बाय द वे यहाँ पे हमने फॉर्मूला नंबर 2 में से 2 को 3 में से माइनस नहीं किया, 2 को 1 में से माइनस किया है, लिखने में गलती है थोड़ी. चलिए, हम फॉर्मूला नंबर 3 में अब इस y की वैल्यू को रखेंगे. सो फॉर्मूला नंबर 3 इज x प्लस y इज इक्वल टू 19,800. सो x इज इक्वल, x प्लस 1800 इज इक्वल टू 19,800. सो अब सीधा हम करेंगे प्लस माइनस, x इज इक्वल टू 19,800 माइनस 1800. So I will get the value of x, that is 18,000. Right, this is my principal value, or you can say cash price of this third installment. Now मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड करी, एक इंटरेस्ट की, एक इंस्टॉलमेंट की, और रेट इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर दिया. दिस इज माय इंटरेस्ट, y स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट. नाउ अब मुझे यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन कैलकुलेट द कैश प्राइस मुझे फाइंड करनी है. सो मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू सारी फॉर्मूलाज में 1 by 1 रखूंगा और लास्ट में डाउन पेमेंट को ऐड करूंगा उसमें, एंड आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ यू कैन से कैश प्राइस. सो लेट्स गो टू द प्लेन स्क्रीन. सो अगेन 1 by 1 में सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखूंगा. सो फर्स्ट फॉर्मूला वाज x प्लस 3y is equal to 23,400, जिसमें मैं रखूंगा अब x और y की वैल्यू एंड आई विल सॉल्व इट. चलिए, सो x वैल्यू इज 18,000 प्लस 3y यानी कि 3 इंटू 1800 is equal to 23,400. Right, moving to next formula, x plus 2y, that is equal to 21,600. So again value of x is 18,000 plus 2 into 1800 is equal to 21,600. सो यहाँ पे हम एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं बाय डूइंग दिस. 18,000 प्लस 5,400, राइट, एंड यहाँ पे भी सेम अगेन 18,000 प्लस 3,600, एंड योर थर्ड फॉर्मूला x प्लस y इज इक्वल टू 19,800. सो अगेन 18,000 प्लस यहाँ पे 1y यानी कि ओनली 1800 इज इक्वल टू 19,800. सो अगेन 18,000 प्लस 1800. नाउ आपके पास
पहले, दूसरे और तीसरे तीनों की ही कैश प्राइस है. सो इसका टोटल करते, सो 18 इट विल बी 54,000. नाउ प्लस इसमें हम ऐड करेंगे डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट हमारा था 20,000. सो आई विल गेट माई कैश प्राइस 74,000. नाउ जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कैश प्राइस ही पूछे. इस तरह के क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा. राइट. सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज 74,000 as a cash price. So moving to next question. Dvija purchased a machine of cash price rupees 2,70,000 on 1/1/2015 from Vija under hire purchase system. She paid rupees 30,000 on signing the contract. The remaining amount was paid in installment on 31st December every year, including 9% interest on balance in cash price as below. Installment are as follows. First installment is of rupees 51,600, second is for 58,900, third is question mark, and fourth is 76,300. Find out amount of missing installment. Now, for solution of this question, we have to make an टेबल. हमें एक टेबल बनाना होगा. सिंपल जो हमारा है हायर परचेस का, वही 6 कॉलमनर. चलिए स्टार्ट करते फ्रॉम वेरी फर्स्ट बैलेंस. यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, जब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट में पहुंचेंगे तब हमें वापस रिवर्स से स्टार्ट करना होगा. नॉर्मली हम पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही स्टार्ट कर, बट जब हम थर्ड पे पहुंचेंगे हमारा सिनेरियो थोड़ा चेंज होगा. चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is your down payment, right? So your cash price is 2,70,000. Your cash price is 2,70,000. So let's put it. Your opening balance of cash price, that is 2,70,000 up minus your first installment is your down payment, that is of 30,000. So as we know, down payment में कोई भी interest नहीं होता है, so it will be dash. The whole value is your cash price, so 30,000, and your balance of cash price will be 2,70,000 minus 30,000. Simply it is column number 2 minus column number 5, so you will get the value 2,40,000. Right. Now this will be your opening balance of cash price for next year, 2,40,000. Now your installment for next year is your, you can say first installment is of 51,600. आपका पहला इंस्टॉलमेंट है 51,600 रुपए का. नाउ इसमें इंटरेस्ट होगा प्लस प्रिंसिपल वैल्यू होगी और यू कैन से कैश प्राइस होगी. सो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है. सो here opening balance of cash price is 2,40,000 into 9%. So your interest for this installment will be 21,600. So after deducting the amount of installment interest from the installment, it will be column number 3 minus column number 4. It will be 30,000. Now for last column, again balance of cash price, you have to deduct 2,40,000 minus 30,000. So it will be 2,10,000. So this will be again opening balance for next year. So 2,10,000. So your next installment, or you can say second year installment, is 58,900. So let's put a value there, 58,900. So again same way we are going to calculate the amount of interest on opening of cash price. So 2,10,000 into 9%, it will be 18,900. Now deduct this 18,900 from the amount of installment, so it will be 40,000
and again balance of cash price 2,10,000 minus 40,000, so it will be 1,70,000. Now this is my opening balance for next year, 1,70,000. Now back to the question. I am messing with third year's installment, so I cannot go further from here. But what I can do is मैं यहाँ पे इसका इंटरेस्ट फाइंड कर सकता हूँ फॉर थर्ड ईयर. सो वो कैसे, 1,70,000 तो मेरे पास है ही, उसका 9% में करूँगा. सो इट विल बी 15,300 राइट. नाउ अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ. आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट. अब मुझे वापस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना होगा. दैट इज माई लास्ट इंस्टॉलमेंट 76,300. चलिए, सो मेरे पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 76,300. नाउ जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है उसमें बैलेंस कैश प्राइस हमेशा आएगी डैश, कुछ नहीं आएगी क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है. इसके बाद कुछ बैलेंस बचती ही नहीं है. और जो आपकी ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट टुवर्ड्स कैश प्राइस, दैट शुड बी ऑलवेज सेम, राइट. और जो ओपनिंग बैलेंस होती है उसी में जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ऐड कर दिया जाता है. दैट इज हमारे यहाँ पे इन सिनारियो में है 9%. सो उसके बाद वो बन जाता है एक इंस्टॉलमेंट. क्यों? क्योंकि ये आखिरी साल है, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है. तो सपोज यहाँ पे मैं एजम्पशन लेनी होगी दैट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, बैक मेन स्क्रीन पे चलते हैं. Suppose your principal value is 100 plus your interest is 9%, so your installment will be of 109. So आपके पास अब 109 पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 76,300. सो आप दोनों ही चीज़ें फाइंड कर सकते हो. या तो 9% पे आप फाइंड कर सकते हो कितना आएगा आपका इंटरेस्ट. इजीली यू कैन फाइंड इट. So it will be 9 multiplied by 76,300 divided by 109. So your amount of interest will be 6,300. So we'll put it in the table. Your interest is 6,300. Now जैसे ही हम माइनस करेंगे 6,300 को इंस्टॉलमेंट में से, so I will get my प्रिंसिपल वैल्यू 70,000. एंड एज आई टोल्ड यू लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपकी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस और क्रेडिट्स ऑफ कैश प्राइस यानी कि कॉलम नंबर 2 की प्राइस और कॉलम नंबर 5 की प्राइस हमेशा सेम होती है. सो इट विल बी 70,000 हियर ऑल्सो. अब जो इस ईयर की ओपनिंग बैलेंस है वो होगी लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस. सो फॉर प्रीवियस ईयर इट विल बी अगेन 70,000 बैलेंस ऑफ कैश प्राइस. एंड नाउ स्टिल आई एम मिसिंग विथ माई अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड क्रेडिटेड कैश प्राइस. सो अब एक सिनेरियो सिंपल है कि जब मैंने कॉलम नंबर 2 यानी कि 1,70,000 में से यहाँ पे कॉलम नंबर 5 की जो मिसिंग वैल्यू है वो जब मैंने माइनस करी होगी तो ही मुझे बैलेंस ऑफ कैश प्राइस मिली होगी, राइट. सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मैं 1,70,000 में से अगेन सिर्फ 70,000 जो कि मेरी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस को मैं माइनस करूँ तो मुझे मिल जाएगी यहाँ पे कॉलम नंबर 5 की वैल्यू. सो दैट विल बी ऑफ 1 लाख. ये कैसे आई? 1,70,000 माइनस 70,000, राइट. अब कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 यानी कि 15,300 प्लस 1 लाख को मैं प्लस करूंगा. सो आई विल गेट माई वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट. सो इट विल बी 1,15,300. That's it for this question. So your correct answer for your missing figure, that will be 1,15,300. So correct option is option number B, 1,15,300. Moving to next question. Cash price of asset plus interest is equal to what? So cash price of asset
प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू योर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या कई बार डाउन पेमेंट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, or not interest, total amount of installment is also your contract price. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में सब चीजें ऐड हो जाती है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जबकि कैश प्राइस में इंटरेस्ट नहीं होता है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर हायर परचेस सिस्टम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज टू, कहां भेजा जाता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को? इसको डाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में. मूविंग टू नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हायर परचेस एग्रीमेंट? एग्रीमेंट में क्या डिसाइड नहीं होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट डिसाइड होता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने होते हैं ये भी डिसाइड होता है, बट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है जो यूज कर रहा है उसके ऊपर, वो क्या मेथड यूज करेगा. चलिए मूविंग टू नेक्स्ट. इन केस ऑफ हायर परचेस सिस्टम इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूड इन व्हाट? कहां पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है? सो डाउन पेमेंट में कोई भी तरह का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है. मूविंग टू नेक्स्ट. Under the hire purchase system, ownership of goods transfer to hire when? So, hire purchase system में और normal installment system में एक ही difference है कि दोनों में goods का possession तो at the time of contract pass हो जाता है, but जो ownership है installment normal system installment की है उसमें पहले installment में pass on हो जाती है ownership, but जो hire purchase system है उसमें at the payment of last installment वो पास ऑन होती है. सो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगा हायर परचेज में आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी. मूविंग टू नेक्स्ट वन. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय द बायर टू व्हाट? सो हायर वेंडर्स अकाउंट. मूविंग टू नेक्स्ट. इन द बुक्स ऑफ हायरर फॉर इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर हायर वेंडर अकाउंट विल बी credited. That's it. Thank you.